Bismillahirrahmanirrahim. My name is Yasin Anju. Today our topic is about matrix. Matrix are rectangular or a formation. Those are enclosed in numbers is called matrix. In matrix, first of all, we want to discuss about row matrix. Row matrix mean the entries written in horizontal way. The entries are written in horizontal way, like this. This is called row matrix, जिसके तमाम इंदराज को हमने उफ़क़ी अंदाज में लिखा है वो कतारी कॉलम या फिर रो मैट्रिक्स कहलाता है। दूसरे नंबर पर हमारी डिस्कशन जो है वो है कॉलम मैट्रिक्स। The entries are written in vertical way. जिसे हमने अमूदी अंदाज में लिखा है, हमने उसे वर्टिकल वे का नाम दिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक चल रहा है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। In fact, order of matrix shows the number of rows in the column. It explains that how many number of rows and columns are used in this matrix. It means we can explain the number of rows and columns. कॉलम का मर्तबा हमें उसके कॉलम में मौजूद उसकी कतारों और कॉलमों को जाहिर करता है। सबसे पहले हमारे पास हमने उसकी कतारों को और उसके बाद उसके कॉलमों को हमने डिस्कस करना होता है। 1 2 3 4 5 and 6। First of all, we have to discuss its row. This is R1 and second one R2 and columns C1, C2 and C3. So its order is 2 by 3. So its order means 2 by 3 also. Next, equal matrix. Equal matrix mean there are the two rules are applied here. इसमें दो चीजें इंतहाई जरूरी हैं। पहली हमारे पास their order must be seen and their corresponding entries
must be equal also. So these are called equal matrix. पेज कैसे इसका कन्वर्ट हो रहे हैं नेक्स्ट पेज कैसे कन्वर्ट हो रहा है आगे पेज नेक्स्ट जी There are two values of an equal matrix. First is their orders are same, and second one इक्वल मैट्रिक्स में उसकी दो खुसूसियात का होना जरूरी है। पहले ये है कि उन दोनों का मर्तबा एक जैसा हो, देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम आल्सो। दूसरी, देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट बी इक्वल, कि उनके मुताबिकत के अरकान एक जैसे हों। फॉर एग्जाम्पल में हमने कहा इफ A is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and 6, and B is equal to 2 minus 1, 1 plus 1, 5 minus 2 and 2 plus 2, 5, 3 plus 3. दिस इज इक्वल मैट्रिक्स। अगर हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, वन, 2, 3, 4, 5 and 6, एंड इट्स ऑर्डर में R1 है, R2 है, C1, C2, C3 है, as it R1, R2 and C1, C2 and C3 है। So A and B is equal to B also. Now we want to discuss about
null matrix. Null matrix mean all the entries must be zero also. If A is equal to 0, 0, 0 and 0, if all entries must be zero, जिसकी पूरी की पूरी इंद्राज जीरो हो वो जीरो मैट्रिक्स कहलाता है, जीरो और नल मैट्रिक्स. Now we want to discuss about exercise number 1. Order of matrix. A is equal to 2, 3, minus 5 and 6. So R1, R2, C1 है, C2 है. So its order is 2 by 2. If B is equal to 1, 2, 3, R1, C1, C2 and C3. So its order is 1 by 3 here. If D is equal to 4, 0 and 6, so R1, R2 and R3 and having only one column, so its order is R1, R2 and R3, C1. So its order is 3 by 1 also. And equal matrix. Next our question is about equal matrix. In our previous lectures we learned about what are the equal matrix if their corresponding entries must be equal and their order must be same also. पहले हम इक्वल मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि ये वो कॉलम हुआ करती हैं जिनके मर्तबे एक जैसे हों और उनकी मुताबिकत के अरकान भी एक जैसे हों, इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं. And in this question we have to learn about whose are the equal matrix such like this. B is equal to 3 and 5.
So I is equal to 3 plus 2. After its simplification, 3 and 3 plus 2 is equal to 5, and their orders are 1 and C1 here and C2. Its order is 1 by 2 and its R1 and C1 C2, so its order is 1 by 2. Up next, and that was the last question. They find the values of A, B, C and the D which satisfy the matrix equation. कहते हैं दिए गए मैट्रिक्स की में A, B, C और D की वैल्यू मालूम करनी है. कहा उसने if A is equal to A plus C, A plus 2B, C minus 1, 4D minus 6 is equal to 0, minus 7, 3 and 2D. Both of them are equal matrix. The sign of equality is show that these are the equal matrix and their order must be same also. And these are their corresponding entries. These are equal to that. It means A plus C is equal to 0. Equation number 1. A plus 2B is equal to minus 7. C minus 1 is equal to 3. 4D minus 6 is equal to 2D. That is equation number 2, equation number 3 and इक्वेशन नंबर 4. सबसे पहले हमें उस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा जिसमें हमारे पास एक वेरिएबल पाया जाता है, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 3 आल्सो. इट मींस c minus 1 is equal to 3. इसमें एक वेरिएबल c पाया जाता है, सो c minus 1 equal to 0. इसमें -1 को जैसे ही हम उसकी इक्वालिटी के राइट साइड की तरफ ले जाएंगे, सो वी हैव टू चेंज इट्स साइन. इट मींस व्हेन समथिंग इज कैरिंग टू लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट ऑफ इक्वालिटी, सो वी हैव टू चेंज देयर साइन ऑफ कोएफिशिएंट आल्सो. तो लिहाजा हम इसमें किसी भी वेरिएबल की कीमत मालूम करने के लिए उसके साथ लिखे हुए प्लस माइनस वाले कांस्टेंट को इक्वालिटी की दूसरी तरफ ले जाएंगे, उसकी अलामत को चेंज करते हुए. कैसे? कहते हैं c minus 1 plus 1 is equal to 3 also. Like this, c minus 1 is equal to 3. हम 1 को लेके जा रहे हैं 3 की तरफ, सो c is equal to 3 plus 1 is equal to 4. Put the value of c in equation number 1. A plus c is equal to 0. A plus 4 is equal to 0 also. अब हम 4 को 0 की तरफ ले जाते हुए हमने 4 की अलामत को बदला है. 0 minus 4 is equal to
minus 4. Now put the value of c also, and we have the value of a. अब हमारे पास c की वैल्यू पुट करते हुए हमारे पास a की वैल्यू आई है -4 सॉरी. नेक्स्ट put the value of a in equation number 2. Put the value of a in equation number 2. And what was the equation? A plus 2b is equal to -7. अब उसमें हमारे पास a जो था वो -4 के बराबर है, प्लस 2b इज इक्वल टू -7. -4 को 7 की तरफ ले जाते हैं, 2b इज इक्वल टू -7 plus 4. We know that when they have the different signs, so we have to subtract them and put the value of greater value. अब हमारे पास -7 plus 3 दोनों की अलामतें मुख्तलिफ हैं, लिहाजा हम इसमें सब्ट्रैक्शन का अमल करेंगे. अमल करते हुए हमें बड़ी रकम की अलामत लगानी है. -7 plus 4 मिलकर के -3 बनाता है. 2b is equal to -3. 2b over 2 is equal to -3 over 2. Now b से कटने के बाद b is equal to -3 over 2 also. अब हमारे पास आखिरी वैल्यू मालूम करनी है d की. हमारे पास जो वैल्यू है वो 4d - 6 is equal to 2d. हम ये बात पढ़ चुके हैं कि हमेशा छोटी रकम को बड़ी रकम की तरफ ले जाते हैं. हम लिहाजा हम 2d को 4d की तरफ ले आएंगे, -6 को 2d की तरफ लेके जाते हैं. अब 4d इज इक्वल टू 4d minus 2d is equal to plus 6. Different signs, so we have to subtract them. हम उसे माइनस करते हैं. पता चला कि 4d में से 2d जाएगा तो हमारे पास 2d is equal to 6 बनता है. 2 से मल्टीप्लाई होने जा रहा था, एंटी प्रोसेस यूज करेंगे तो 2d over 2 is equal to 6 over 2. 2 से कटने के बाद d is equal to 3 also. 2 1s are 2, 2 3s are 6. So d is equal to 3. So a is equal to -4, b is equal to -3 over 2, and c is equal to 4, and d is equal to 3 also. Today that is enough also. Next inshallah we have to discuss about the types of matrix.